when Abdullah and Suryansh approached me because they wished to be of some service, we discussed a number of ideas they had. They thought of first, teaching the help that comes at home and or going to slum areas. Teaching was the only option they could think of at that point. Then they tried it out for a couple of days, and then they realized that they have an intense pressure of coaching and studies, and they couldn't actually go out. And then I offered them the janitorial teaching program, which we had already scheduled for the animators of class 9s and 11s in the second half of the year. I thought myself, let me give these people a try, that maybe though they are not trained in the empowerment techniques, maybe they will be able to do justice to what we want. And it was their effort was stupendous. We were like amazed at the kind of dedication, the kind of qualities they displayed. Their hidden talents came out, the way they negotiated, the way they talked to others, all that. And then convincing these people, those who were uneducated or who were in the latter years of their lives, and convincing those people that they have got a chance to study, that was something brilliant. And I gave my full backing to this group of students, and we devised the whole program, and I started mentoring them in the way it should be done. And I can see it now that it's such a big success. We have happy staff members, happy students, and such a positive environment has been created in the school. These children, they took up this challenge, and on their own they decided that they would train, they would educate the janitorial staff of the institution, which was something very, very commendable. And by the time I could get in touch with the coordinator and find out how things were moving, I got to know that there was already a plan wherein the children had designed a program, and they were teaching teaching the janitorial staff, maybe during assembly time, zero period, after school, before school. But there was a program which was working, and it was working very efficiently. क्योंकि जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, जैसे सर्कुलर साइन कराए या कोई और पेपर दिया, तो मुझे स्पेशली बताना पड़ता है कि किस जगह जाना है, या मैं उनसे फिर ऐसा काम नहीं लेती हूँ। जो थोड़ा पढ़े होते हैं उन्हीं को मैं देती हूँ कि कोई भी काम भाई मिसप्लेस ना हो या कोई पेपर मिसप्लेस ना हो, तो थोड़ा देखना पड़ता है। अगर जैसे कि कुछ लोग हैं यहाँ हिंदी लिखना चाहते हैं, मगर वो लोग डरते हैं कि लाइए बैंक में पैसा हम निकाल पाएंगे या नहीं, मगर अगर उन्हें ज़रा सी नॉलेज हो जाएगी तो बैंक में पैसा या फॉर्म हिंदी में कुछ भी भर सकते हैं। अगर आदमी को अगर सही से हिंदी लिखना और पढ़ना आ जाए तो समझ लीजिए वो कोई भी सरकारी काम को आसानी पूर्वक कर सकता है, उसको कोई दुर्घटना नहीं हो सकती कि फ्रॉड नहीं कर सकता है। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है। When you know that someone is not able to read a basic thing, so ma'am, you have this thing in yourself that I have to teach him. How this woman is 50 years old and I'm just 16. Ma'am, I can do all this, but ma'am, she just can't even read a newspaper. हम आपसे ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको होने वाली थी जब वर्कर्स ऐसे पढ़ने की तैयारी करने लगे, या तो आपने क्या सोच के हाँ कह दिया जब बच्चे आपके पास? मैम ऐसा था, इसमें बहुत से लोग हमारे पास वर्कर ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा बहुत कोई पढ़ लेते हैं हिंदी, कोई नहीं भी पढ़ पाते हैं। तो ये हुआ कि चलिए भाई एक प्रोसीजर हो रहा है उन लोगों की पढ़ाई का, तो इसलिए कि भाई सबको पढ़ ले, अच्छी बात है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आगे हमेशा काम आती है।
ma'am, we were out of resources and we were very much time constrained. So we went to our lovely Shimra ma'am for some assistance with in this program, and we wanted to talk to her about what we could do in such less time and how to. Our ideas, and she gave us the directions, and she gave us a place to teach to those people, and then she took us to a teacher, Reina ma'am, and she Each one teach one kit. the each one teach one kit. It was a program. It was already being run, and since we were a little directionless, so we were time constrained, and that program helped us to complete everything in 6 weeks. आप पहले कभी पढ़े थे? जी नहीं। कभी नहीं पढ़े। बचपन में कभी माँ बाप ने नहीं कहा कि माँ बाप पढ़ने चले गरीबी जाओ? थे। हाँ हाँ। माँ बाप गरीबी थे, तो कोई भी हमारे घर में कोई नहीं पढ़ा। संस्कृत से मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद संस्कृत से मैंने इंटर भी किया। आप तो पंडित जी हैं हमारे यहाँ के, और हमको ये पता ही नहीं मेरी है। मेरी इंग्लिश जो है इसलिए कमज़ोर है। मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ, कहीं पे जाता हूँ तो अगला आदमी अगर इंग्लिश में बोलता है तो मैं वहाँ पे बिल्कुल ना पढ़ा के बराबर हो जाता हूँ। पढ़े लिखे होते हुए लेकिन वो इंग्लिश बोला तो मैं खड़ा हो चुका हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या कह रहा है ना? अच्छा, ये बताइए कि कभी पढ़ाई करी थी आपने? जी हाँ, कब? मतलब शादी से पहले। शादी से पहले गांव के स्कूल में पढ़ती थी कि यहीं शहर में? नहीं, शाहजहाँपुर में। कुछ याद था जब आपने वापस पढ़ाई शुरू करी यहाँ पे? याद तो बस ABCD आती थी। अच्छा। जैसे फादर है, मदर है, सिस्टर है। ग्रेजुएशन दीदी यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया? कौन से सब्जेक्ट्स में? हिंदी, एजुकेशन, सोशलॉजी। अच्छा, और उसके बाद ये बताइए कि फिर आप यहाँ गार्ड की ड्यूटी क्यों करने लगे? आपने ट्राई नहीं किया कि आपको कहीं? नहीं दीदी, जॉब के लिए ट्राई किया है बहुत से जगह, फॉर्म अभी भी डाल रहे हैं। अच्छा जी। आपने क्या पहले पढ़ाई कर रखी है? हमने मैम ग्रेजुएशन किया था CRPG कॉलेज से। अच्छा। और BA वो हमने सोशोलॉजी और एजुकेशन से किया। एजुकेशन से। और फिर लग गए बिजली बनाने में? हाँ, फिर हमने फिर कंप्यूटर का भी किया। अच्छा। DCA। फिर जरा नहीं कहीं लग रहे थे तो हमने सोचा कुछ हुनर भी आ जाएगा। जब बच्चों ने आपके पास जाके कहा कि हम पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ेंगे, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हम तो बच्चों से मैंने कहा भी था कि हमको फॉर्म भी भरना है। हम अच्छा। भरना चाह रहे हैं। फॉर्म भी भरना है। कि हम चाहते हैं कि हम पढ़ें, पढ़ाई लिखाई से बहुत आगे नॉलेज मिलती है। तो कैसा लगा ये सुन के जब बच्चों ने कहा कमलेश भैया पढ़ेंगे तो आइए हम पढ़ाएं? हमको तो अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? अच्छा। हम तो सोचते हमको अगर 1 घंटा पढ़ने मिला और अच्छी बात। महीना 1.5 महीने हुए जी। तो क्या कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि ऐसा है कि कुछ बच्चे पढ़ाएंगे, कुछ हम ही को अपने से हाँ, सीखेंगे। तो थोड़ा बहुत जो आ जाएगा वही ठीक।
ये तो एक तरह की परेशानी थी। जब इन्होंने पढ़ाई शुरू की, अलग अलग टाइम स्लॉट्स में सब जा रहे थे, तो आपको क्या परेशानियां हुई और आपने उनको कैसे मैम देखिए, एक साथ सब पढ़ने की वजह से वर्कर हमारे पास कोई हैंड्स बचते नहीं थे, तो बहुत से काम ऐसे होते थे कि हम लोगों को खुद ही करने पड़ते थे। अब वो इसलिए करते थे कि भाई इन लोगों का है कि अपना थोड़ा बहुत पढ़ लें। हम इस समय एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट ये सब हमें मालूम है, बस रिवीजन की जरूरत है, तो पूरा मालूम है। ये एक अच्छा मौका मिल गया कि आप रिवीजन हो जाए। पढ़ जाओ, थोड़ा बहुत सब आता है ना। कहीं जाओ तो कुछ भरना नहीं आता है, पढ़ो थोड़ा, सब पढ़ने लगोगी। सब वहाँ जाओ बैंक में पर्चे मिलते हैं, उनको भी भर लो। सब शर्म आती होगी पहले पूछने से कहने में कि भाई आप जरा इसको पढ़ दीजिए, अजीब सा लगता है। तो अब जब अपनों को आ गए तो किसी से नहीं, अपने ही भर लो। अब आप टूटी फूटी अंग्रेजी भी समझ सकते हैं। अगर कोई बहुत जल्दी ना बोल रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि कौन से वर्ड इस्तेमाल। किताब छोटी छोटी पढ़ लेते हैं। किताब छोटी छोटी पढ़ लेते हैं। दीदी अभी बस 100 तक की जो है ये 1 2 आ गया है, और वो छोटा बड़ा वो जैसे वर्णमाला जो है सीख लिया है आपने। अच्छा, अभी अक्षर जोड़ के पढ़ना सीखना नहीं शुरू किया। अब आप अगली बार में इसको शुरू करेंगे। अब दीदी अब भैया लोग चाहेंगे तो नहीं, भैया लोग बिल्कुल चाहेंगे। इम्तहान दे के जैसे ही खत्म हो गए वो फिर लग जाएंगे वापस पढ़ाएंगे, है ना। क्या तो क्या सोचा, क्या सोच के ज्वाइन कर लिया? मैंने मैम यही सोच ज्वाइन किया कि जो मैंने छूट किया है हमारा, वो मैं फिर से लाना चाह रहा था। तो उन बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, बहुत तरीके से नॉलेज भी कराया। उस चीज़ का भाग मुझे अच्छे से हुआ कि अब मैं कर सकता हूँ अच्छे से। मुझे फॉर्म नहीं भरना आता था, मुझे फॉर्म भरना आ गया। अच्छा, ठीक है। हाँ, बैंक का जैसे कोई ड्रॉप भरना होता है तो मैं फिलहाल ट्रांसलेट करके मैं भर लेता हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ा। और इंग्लिश में जो भी बोलना था थोड़ा बहुत समझने ही लगा हूँ। मतलब कोई भी इंग्लिश में बच्चा बात भी करता है कि थोड़ा तुम्हें इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं उसकी बात को रिपीट कर सकता हूँ। अच्छा, वेरी। और अभी आप लोग क्या क्या, मतलब अभी तक आप कहाँ तक पहुँच गए हैं? क्या सीखा आपने इस 1 हफ्ते भर में या 10 दिन में जो आप? वो दीदी सीख गए, फॉर्म भरना हो दीदी तो भर लेंगे अपने आप से। अच्छा, नेट चला लेंगे। नेट चला लेंगे जी, कुछ भी ढूंढना सर्च कर लेंगे दीदी। Just last week, the person who is there at the office gate, he sent me a message, and believe me, that message was so properly written. The message read, kindly get the ID of your daughter. Respected man, please get the ID proof of your daughter. पढ़ाई के बाद देखिए मैम, चेंज तो दिखता ही है कि जो चीज़ जो नहीं पढ़ पा रहे थे, हमने कोई पेपर दिया, उन्होंने पढ़ लिया। बहुत से हमारे वर्कर इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश में नाम लिखे रहते हैं सर्कुलर में कि पढ़ लिया, अपना फटाफट गए और साइन करा। Actually, during this teaching phase of around more than 1 month, I saw, I kept on observing this on regular basis, that they were very much involved into this program, and they have taken this program very seriously. Like whatever our basic motto of this program, that teach one, and they were very much indulged into this program to the extent that they were knowing each of the participant, like their personal background, their what are the shortcomings, why were they not able to learn by now any of the Hindi, English or basic maths, and what were the flaws, and they were able to not teach them, but they were able to win over their heart. So all those learners, they were willing to learn from them. What do you see in the relationship? Yeah, all these class menial staff which were selected as a learner, I found all these menial were very much respectful, not only towards those students who made them learn, but as I am coordinating class, I have been getting lot of respect from these menial staff as a teacher, because as a teacher we have taken an initiative to teach those menial staff, and now they are very much respectful, not only towards those students but towards us as well. These kids came to me about using the labs for teaching computers to the educated staff. I thought they are just doing it for the certificates and all, but you can actually see the change when the staff using it. They come to me daily in the morning for using the computers, and I don't have to tell them anything. I just switch it on and they start doing everything by their own. So
to see the difference, you have to actually see the staff. They have changed a bit after the teachings students have done to them. Ma'am, earlier, ma'am, when we started to teach each other, ma'am, the learner was very reluctant. Ma'am, they treated us like we were someone very respected. But now, ma'am, they respect us, but ma'am, now they treat us as our friends. Earlier, ma'am, they were like, whenever she didn't complete her homework, she would be like very sad or that. But nowadays, she feels free to tell me a reason. Initially, we were facing two problems. The first one was that initially the students were not willing to take part in the program. They were reluctant, and as the program proceeded, the enthusiasm increased and students started coming, and they also started liking the program and they wanted to study. The zeal increased. And the second problem was that we didn't have space to teach them. First we thought that we'll teach them in the biotech lab, but the biotech lab was also occupied because of the practicals going on. We thought that we'll teach them during the lunch hours or after school hours, but the zeal was so high that we started teaching them even on the stairs or in the backfield. Meeting, we hardly knew each other, but as the time passed by, interaction increased, and the bond between us also increased. In the first meeting, they were kind of shy with us, but now we are free to talk with each other. He tells me about his family, he tells me about the problems he's facing in the studies. Now I feel great in helping him out in all these problems. During the first time, he was like, "What should I study?" Or he was not very friendly with me, but now he's kind of friendly with me and he's always free to talk to me, and every time he meets me he's like asking me problems about what his family is, all the studies. But now we are all right and we are doing great. अच्छा, आगे इस पढ़ाई का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या 10th अगर मौका मिलेगा, जैसे स्कूल से हम अगर बात करें आने वाले समय में कि जो बहुत ही अच्छी बात है, तो अगर हमें 10th करने मौका मिल रहा है, इससे अच्छी कौन सी बात है? 10वीं का फॉर्म स्कूल भरवाया हमको, और मैम वो अगर हमें भर जाता है तो इसके लिए हमारी बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि ये आगे चल के हमारे भविष्य के लिए काम। इस पढ़ाई का इस्तेमाल और कैसे कर सकेंगे, आपको क्या लगता है, जब आप इंग्लिश अच्छी पढ़ जाएंगे? इंग्लिश दीजिए, अगर हम अच्छी पढ़ जाते हैं तो आगे चल के हम 2-4 बच्चे मोहल्ले के, आजकल इंग्लिश का दौर चल रहा, तो हम सोच रहे हैं कि अगर हमको हिंदी मैथ ये सब तो आता ही है, अगर इंग्लिश में जान जाऊंगा तो मैं और बच्चों को कुछ पढ़ाऊंगा, कोचिंग जैसे चलती है, छोटे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। अब इंग्लिश ना होने की वजह से मैं वहाँ फेल हो जा रहा हूँ। अच्छा, वो आप वरना वो सब तरह की एजुकेशन आप नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, इंग्लिश नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं। अच्छा, है कि हम आगे चल के अगर मेरा कोई भी सहारा ना, तो हम अपने पढ़े लिखे हो तो आगे चल के कोई भी कारोबार अपने पैरों पे खड़े होकर आगे से बढ़ सके, ताकि हम दूसरे को सहारा दे सकें। ये लगता है कि आने वाले समय में ये पढ़ाई आपके काम आएगी? आएगी, क्यों नहीं दीदी, कुछ नहीं, अगर कहीं गए तो कम से कम पढ़ तो दिया कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो वही है कि आप लोगों ने, दीदी लोगों ने भी सोचा कि लोग कुछ पढ़ लिख जाएंगे, यहाँ साइन कर लेंगे, अपनी तनख्वाह गिन लेंगे, हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। और वैसे बच्चे भी जो पढ़ाते हैं, हमने अपनी लाइफ में देखा, हमने ग्रेजुएशन भले किया हो, वो इस लायक बच्चे हैं कि वो किसी भी यूपी बोर्ड के किसी भी स्कूल में इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। अरे वाह, इंटर की बच्चे पढ़ा, हमने जहाँ से इंटर किया है वहाँ भी ये पढ़ा सकते हैं इंग्लिश, हमारा तजुर्बा बता रहा है, और ये हमारे जो टीचर थे उनसे लाख गुना अच्छा पढ़ाते हैं। Many of the interviewees, when they talked to us, they said that few of them are like class 9 and they did not appear for their boards, and
Do you think in future the school can help them appear for these exams and, you know, get them these basic degrees which would help them? Why not? I think we can, and at least personally I would say that people who want to, we should come up and sponsor their education, even if they are not in a position to pay. The people who are more privileged, who come from affluent backgrounds, they should sponsor the education of such people, and then only we can help this nation to